Assalamualaikum everybody and welcome back to another episode of Dear Sister by Happy Chirp. अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ तो you all probably know कि हमना बाजी is not in the country and as Yusra once said कि the show must go on. So here I am, your host for tonight. And with us हमारी as usual हमारी guest जो हैं Izza Fatima. Hello. How are you Izza? Great. How was your day? Work, but as usual. Yeah. Anyway, so हमारे साथ एक और बहुत special guest हैं आज, somebody who was newly hired in 189 Media as the content associate. Something that I started off my journey here with. That is Sanya Farooqi. Yay! How are you, Sanya? I'm fine. How are you? I am very good, thank you. आप अपने बारे में audience को थोड़ा सा बताएं. What do you do? How you ended up here? So I ended up here एक बिल्कुल चांस से because it was not expected at all. मैंने मुज़म्मिल भाई की Instagram पे देखी थी story about the content associate thing and then I just clicked it और मैं बहुत randomly वहाँ पे मैंने click किया और CV भेज दी and then out of sudden I got a call and I was super excited. तो हालांकि I am in Gujranwala, like I'm situated there, but Islamabad आना और यहाँ पे काम करना it was like a dream. So I was like कि बस सब छोड़ो and just go for it. Congratulations on that. How was relocating? Is it hard? It's hard, like it's really hard, but I have like a plus point because my family, my brother, he's here for like a year. So that's like still a very, home kind of feeling, but I Did know you ever come to Islamabad pehle? Yeah, Islamabad. Achha. I used to come here a lot because my best friend used to live here. पर अब ये सीन है कि अब थोड़ा सा होगा obviously जब भाई यहाँ से जाएगा तो फिर मुश्किल होगा. But let's see, it'll be fun. It'll be a new experience. Oh, okay. और आपने किया हुआ क्या है? Tell us a little about your early life as well. I have done my bachelor's from Gujranwala Gift University. Wow, that's unique. I have never heard of that जिसका before. almost क्या बहुत से लोगों को नहीं idea. अच्छा. But it's like it stands for Gujranwala Institute of Future Technology and it's the only good best university in Gujranwala. So I had to stay back with my mother, so I chose that and I started there as a fashion design and textile bachelor. Lekin after some time I switched to mass communication and media studies. Or फिर that's the journey and I got graduated as a media student. That's it. अच्छा, so you told me something about yourself कि पहले आप fashion की degree कर रही थी and then you switched. So what was that switch like for you? It was fun. It was hard too because fashion is like a total different thing. Media से relate करता है, but when you go in the insides of it, तो वो बहुत मुश्किल है. Fashion, it's all glitz and glam, everything shiny and all that. That's true. Media is like very technology and very like on point situations. तो और हम लोग का था भी जर्नलिज्म तो इट वाज लाइक होस्टिंग पीपल न्यूज़ कास्टिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग सो इट वाज नाइस इट वाज अ वेरी glitz and glam switch to a very like kind of. So was it boring at any point? क्योंकि I feel like मैं bore हो जाती if coming from fashion अचानक से tech. Boring तो नहीं. Actually I got lucky enough कि मुझे मेरे teachers बहुत अच्छे मिले. So वहाँ पे situation was like कि बहुत वो hectic नहीं होता था बिल्कुल भी. It was very calming, very easy to go. What was your university like? Like what kind of answer do you expect? Actually हम university life पे बहुत बात करते हैं already, so I would really want to know कि आपकी university life कैसी थी? My university life academically it was really good. I secured 3.9 CGPA, so it was. Everyone here is a good student. Yeah. Are you? Oh God, I am so bad at it. I struggle. Yeah. But friendships wise, it was. I feel like ये तो सबका problem है. It was very tough. मतलब fashion design में तो मेरी सिर्फ एक ही friend होती थी, but actually mass comm it really made me more social. मेरा बहुत interaction होना start हो गया था लोगों से thanks to social butterfly Sanya Farooqi. Yeah. I was the social butterfly in the university and everyone used to get really shocked कि यार तुम हर एक से आराम से कैसे बात कर लेती हो, like why are you so easy to talk to? Are you an extrovert? Kind of. I'm more like an ambivert. अच्छा. That's what I call myself also, but everybody is always like नहीं तुम तो extrovert ही. I was an extrovert, but after some things, like after some friendships, I decided no. It's better to not really. So yeah,
went like that. तो हाँ पर जो फ्रेंड्स हैं जिनसे कनेक्शन बहुत अच्छा बना, they are still like we are still in contact and everything is going good, they are living, and so growing up, what were you passionate about? Was it fashion or was it media? It was fashion. I always wanted to be in fashion and मेरी sketchbooks होती थी, I used to draw a lot. उसके ऊपर मैं कपड़े डिज़ाइन करती थी, बार्बी डॉल्स डिज़ाइन करती थी, स्केच करती थी and everything. But I sometimes think कि कैसे मैं अचानक मीडिया की फील्ड में आ गई, बिकॉज तो कैसे आ गई आपने क्यों किया? क्यों? एंड ये बताएं आपकी जो डिग्री है वो आखिर में कितने साल में आपने मैंने एक्चुअली मैं जब मैं उसमें थी ना फैशन में, मेरा एक फ्रेंड बना, आई वुड लाइक टू नेम हिम जान शेर. He was from mass communication. Shout out to Jan Sher. Okay. Yeah, shout out to Jan Sher. He was like a mass comm student and then he said तुम क्या कर रही हो, तुम लाइक फैशन में क्या कर रही हो, तुम होस्टिंग अच्छी करती हो, तुम इंटरैक्ट अच्छा करती हो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग इन फैशन. एंड आई वाज लाइक क्या मतलब लाइक फैशन रिलेट नहीं करता. तो ही सेड कि नहीं मतलब यू शुड गो, यू शुड टॉक टू पीपल, यू शुड डू दिस एंड दैट. उसने मुझे इतना मेरा वो माइंड चेंज किया, इतना मुझे परसुएट किया. मैंने कहा चलो लेट मी जस्ट ट्राई, लेट मी मीट द एचडी ऑफ फैशन सॉरी मास कॉम. एंड व्हेन आई मेट सर ताहिर मलिक आई वाज लाइक डैम, मास कॉम इज अ थिंग. तो फिर मैं मास कम्युनिकेशन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया. लकीली इतना टाइम नहीं गुजरा था, फैशन इट वाज जस्ट 1 year. तो इज़्ज़ा के क्वेश्चन से मेरा 1 साल एक्स्ट्रा लगा है पूरा. So 5 years Yeah. from bachelor's. 5 years. Do you think that the shift was worth it? It was totally worth it. Yeah. Why so? Like, was it because of what you studied? Yeah, your friends. What I studied, what I learned, I got to know that my interest is in more in PR advertising. I got really nice teachers. They are more like my friends now. जो कि फैशन में ऐसा सीन नहीं था. लाइक वहाँ पे वो था कि you know the importance of having good friends and good teachers. It's like the difference that they make is like it's uncanny. Yeah. Acha. So coming to our topic that we decided to talk about today was something that Sanya actually suggested, something that she has been working on since her time in fashion, and that is thrifting. So it's a very interesting topic and something that I found out about very late in my life, which is unfortunate because मुझे यही था कि मुझे पहले क्यों नहीं पता था इस सब के बारे में. I mean it sort of changes your life, you know. कि I've been spending so much on these brands that you know I probably don't even wear that, you know, it that much. लेकिन with thrifting it's like it has changed my life. So since we are talking about it, पहले हम इज़्ज़ा से पूछते हैं कि इज़्ज़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको thrifting का कब पता चला. And I know that you thrift a lot, right? Oh God, I love thrifting so much. अच्छा जब यूनिवर्सिटी में आई, यूनिवर्सिटी से पहले मेरा कोई वार्डरोब क्लोजेट नहीं बना हुआ था. तो आई थिंक शायद विंटर शुरू हो रहे थे और यू नो बिकॉज हॉस्टल इज़ दैट प्लेस जो कि बच्चे आपस में ऐसी बातें शेयर कर रहे होते हैं क्या क्या. सो वहाँ का आपस में उनका बना हुआ था कि अच्छा चलो बाज़ार चलते हैं, इतवार बाज़ार या जुमा बाज़ार या मंगल बाज़ार. तो उस वक्त मैं सोच रही थी अच्छा आई यूज्ड टू थिंक, मैं पहले इसको एसोसिएट करती थी कि अच्छा वेजिटेबल्स मिलते हैं यू नो होलसेल में, होलसेल रेट्स में, इस तरह पता नहीं. अच्छा फॉर मी इट वाज ऑलवेज डिफरेंट. फॉर मी इट वाज ऑलवेज कि अच्छा मतलब सेकेंड हैंड चीज़ें हैं, ज़्यादा और कुछ वैरायटी नहीं होगी, इट्स जस्ट यूज्ड स्टफ. लिटिल डिड आई नो दैट दे हैव न्यू स्टफ देयर इन इतवार बाजार एज वेल. वो ऐसी जगहों से आते हैं ना, लाइक अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, इतवार बाजार का चक्कर लगाएं और वो वहाँ पे ज़रूर मिलेगा. और वो इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं कि आप कहते हो यार ये यहाँ पे आम शॉप्स में तो है नहीं, बट व्हेन यू गो देयर यू लाइक वाओ. हाँ, एंड नॉर्मल शॉप्स पे इट्स लाइक सो एक्सपेंसिव. लाइक आप देखते हो और आप कहते हो यार मैं तो नहीं ले सकती. बिल्कुल ऐसा ही है. तो लाइक वो स्टूडेंट के लिए ना बहुत फ्रेंडली होता है. आई रिसेंटली लाइक अभी जो आपने कहा कि हाँ आई डिड गो टू इतवार बाजार अभी इसी हफ्ते. तो समवन मैसेज मी कि इज़ इट वर्थ इट. और मैंने I was confused. Why is that even a question? I was like, yes, it is like totally worth it. और उसने कहा कि नहीं, I've heard that they're super expensive, but they are actually not. Also depends कि आप कहाँ पर जा रहे हैं. लेकिन आप किधर जाती हैं सबसे ज़्यादा? मैं H8 में जाती हूँ. अच्छा. वो तो पूरा सारा बाजार है ना, वो सारा लाइक वहाँ पर हर चीज़ लाइक पिंजरे से लेकर कपड़ों से लेकर सब्जी everything. I've been there quite a few times and it's so great. That is such a nice place. और स्पेशली ये जो सीज़न है ना, कुछ महीने होते हैं. एक तो ये जब ऑटम चल रहा होता है, जब स्प्रिंग चल रहा होता है, ये बिकॉज ट्रांजिशन मंथ्स होते हैं एंड पीपल आर
preparing their wardrobe for the next season, तो इस वक्त ना सेल लगी होती है. तो although I did not plan on emptying my wallet, मैं तब निकली बाजार से. That always happens with it Itwar, always क्योंकि happens. आपको सारी चीजें इतनी ज्यादा cheap लग रही होती है कि you buy more of that then, right? हाँ. That's true. तो एक वैसे उसका ये मुझे क्या कहूँ नेगेटिव इफेक्ट लगता है कि हाँ इतनी चीप होती है. It's so enticing that you're like सब ले लो. But it's on us as well ना कि हम अपने आप को कितना कंट्रोल करेंगे. Okay, fine, that's it. बिल्कुल. ये कंट्रोल वाली चीज़ बहुत होनी. It's also like a maze, you know. Whenever I go to this Itwar bazaar, ये H8 वाला जो है, I always get lost. मुझे होता है कभी मुझे होता है कि अगर कोई क्रॉकरी लेनी है, कहाँ गई क्रॉकरी? मिरर लेना है, कहाँ था मिरर? You know, it's so big कि आप गुम जाते हो उसके अंदर हमेशा. But it's really it's convenient. Yeah, it's very convenient. I love that place. Yeah, मतलब I remember मैंने I won't name the brand but recently किसी brand से मैंने एक जैकेट ली थी and वो जैकेट मेरी 2 washes के बाद it is ruined now and it was very expensive just by the way. And I got this one thing from Itwar bazaar like a long time ago, like 4 years हो चुके हैं इस चीज़ को and that is still intact. So I was like all those people who say कि maybe it's not worth it या maybe it's not you know मतलब नहीं अच्छी चीज़ें होती. So yeah, then again बहुत लोगों की preferences होती हैं. Some people are like कि हाँ हम second hand नहीं. Like with me I'm like कि जूते तो for me are like कि आप नहीं किसी के आप ले सकते. Like again that's something that I say कि नहीं करना चाहिए. हाँ. So but some people for them there are really good options there, right? So what are your thoughts guys on the fact कि जो लंडा होता है या इतवार बाजार को जो इतना बोला जाता है कि it's bad या people who actually frequently purchase from there they're like oh ये क्या मतलब you know there's this view जिनसे देखा जाता है. So what do you guys think about that? Honestly, जब मैं फैशन में थी तो संडे इतवार बाजार लंडे का बहुत चक्कर लगता था. तो वहाँ पे पहले शुरू में ऑब्वियसली मुझे भी क्या मैं लंडे से कपड़े लूँगी लंडे से शॉपिंग करूँगी. बट व्हेन वी वेंट देयर आई वाज लाइक ओके लाइक देयर वाज सो मेनी वैरायटी एंड उधर के ये नहीं है कि वो बहुत सस्ता है. इट्स वेरी लाइक कॉस्टली एज वेल. कुछ ब्रांड्स का ऐसा होता है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनके थोड़ा सा कोई डिफेक्ट हो या थोड़ा सा कोई इशू हो तो वो उधर भेज देते हैं संडे बाजार्स में. एंड yeah that is one thing that I didn't know. For me for the longest time इतवार बाजार या ये वाली जगह were like oh अच्छा second hand only you know. When I actually went there and I explored a little तो मुझे पता चला कि नहीं यार यहाँ पे जो ऐसी चीज़ें भी आती हैं which have not been touched as well you know. So this is something जो कि लोगों को नहीं पता होता. हाँ, this is something that they don't know about. अच्छा ये एक्चुअली ना लाइक इतवार बाजार में आपको चीज़ें सस्ती मिलती है क्योंकि लाइक वो होलसेल डिफेक्टेड होता है. लेकिन लोग जो हैं इसको एसोसिएट करते हैं कि यार इतवार बाजार लंडा होता है. हाँ, हालांकि दिस इज नॉट ट्रू. लाइक आपको बहुत अच्छे आपको वहाँ जूते भी मिल जाते हैं लाइक चाइना से मोस्टली वो आए हुए होते हैं. हाँ नए मिल रहे होते लाइक दुकानें बाकायदा बनी हुई हैं. क्रॉकरीज भी सारे न्यू होते हैं. कुछ वाकई इस तरह के थ्रिफ्ट स्टोर्स वहाँ पर एलोकेटेड होती हैं जहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें ही मिलती हैं. बट लाइक लेकिन अगर आपको क्वालिटी के जूते चाहिए लाइक shoes I'd say especially if you're going especially for like sneakers I feel like I've heard कि बहुत अच्छे होते हैं. और मतलब जो winter shoes basically winter shoes winter shoes जाना पड़ेगा और travel के लिए अगर आपने जाना hiking जूते. oh हाँ I remember going there वहाँ पे suitcases भी थे all of these things as well that can help like everything is there. जो एक कैटेगरी जो मुझे लगता है ना जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं like people of all ages that is जूते. और वो भी ट्रैवल वाले जब आपने हाइकिंग के लिए जाना होता है तो लाइक यहाँ पर हमारे पास ब्रांड्स नहीं है जो कि इस तरह के लाइक. एंड देन अगेन गिवन कि we're in Pakistan and with inflation that's going on तो some people can't really afford you know वो वाले brands. I don't think so कि हमें लंडे या संडे बाजार को डिफरेंट बाजार के साथ एक ब्रांड स्टेटमेंट एक स्टेटस स्टेटमेंट बनानी चाहिए बिकॉज if you find I will be like I'm that kind of person मुझे जहाँ पे जो अच्छी चीज़ मिलेगी I'll get that. And then what's with people's you know obsession of being against pre-loved clothing? Like I mean even though I've not gotten it for myself ever but that's not because you know I hate it or I'm against it. It's just because मुझे कभी chance नहीं मिला. But it's really enticing to really see all those options out there कि आप जा सकते हो आप ले सकते हो. But I don't understand the hate for it you know. If somebody has something that they don't want to wear and they decide to give it to somebody else that's a good cause. Like, and then
get money for it. Yeah. Like what's Yeah, wrong in exactly. that? Yeah. True. And pre-loved clothing तो हम लोग बचपन से पहनते हैं अपने बहन भाइयों की. Sorry, can't relate guys, but yeah. Yeah, you're a single kid, but हम लोग तो बचपन से पहनते हैं, so that's like a part of our lives now. Yeah. हाँ, so why अभी तो हाँ, feel ही नहीं हर होता. कपड़ा ही pre-loved है. yeah. ऐसा ही है. So I don't get it. Okay, why people are so There is a against it? thing like with all the climate change and everything like that's going on, this is something we really need to like focus on. Yeah. हमें हर चीज नई जरूरत नहीं है. Huh. I mean, there are so many clothes in my wardrobe that I don't. I've Exactly. not even worn once. Yeah. And like if you like something जो कि मतलब लंडे का हो या इतवार बाजार से anything, as long as like the design is nice, I don't think मतलब कोई मसला होना नहीं चाहिए ना. So like you need clothes and you're getting it at a good rate and it's serving its purpose, so like why the hatred? Yeah, exactly. Also ये जो thrifting का जो concept है ये बाहर से आया हुआ है. पाकिस्तान में तो अब आके thrifting थोड़ी normalize हुआ है, social media पे भी आया है, but पहले what people I guess you both know कि वो trees के ऊपर अपने used jackets लगा देते थे if किसी homeless person को चाहिए. इस तरह wall of hope kind of चीज ना. That kind of thing. तो in abroad, people even thrift the entire furniture of their home. Yeah. Like they don't Oh buy yeah, I've new seen ones. that in so many seasons as well. By the way, Yeah. So like that's so normal there, but when हाँ, obviously इधर तो हमारे स्टोर रूम में पुरानी chairs भी बिल्कुल. पड़ी हुई हैं. Nobody can use them, you know. yeah, like And that. इसकी वजह से हमें ना hoarding की आदत हो जाती Yeah. है. क्योंकि we aren't a nation who gets rid of stuff that we don't need. Yeah, I mean, हम हर चीज को ही रखते हैं. हर हर चीज अच्छा, आज नहीं, बाद में use हो परसों, जाएगी. परसों, हाँ. हाँ किसी और साल और पड़ी रहती है. That's also because we overthink a lot, no? We're like कि कभी जरूरत ना पड़ जाए फिर खरीदनी पड़ जाएगी. Yeah. Yeah. too much future But I planning. really I really like the fact कि पाकिस्तान में जो influences हैं हमारे यहाँ जो social media पे thrift stores Yeah. are now getting common and it's actually really Yeah, nice. every now and then मेरे suggestions में कोई thrift store आ रहा होता है. I remember the last place that I used to work at, वहाँ पे भी मतलब the owner, the CEO, she had a store called Bisbee, ठीक है, and वहाँ पे there was pre-loved clothing that you could also say. It was so convenient for me to really, take those things out of my wardrobe and then things that I had never worn, just by the way, and उनको बेच दिया, ठीक है. It's good for me as well as the person who gets it, right? Because it's less than it's half a the win-win price. situation for literally everyone. Literally, I totally agree with you. It's a win-win situation for all, right? So, totally supporting thrifting, guys. कुछ चीज़ें इस तरह होती है like I am a fan of minimal clothing या solids हो गई या Korean kind of fashion. Yeah. तो वो चीज़ें You look like a Korean. I'm young. So No, I remember when you first came here, तो मैं और युसरा आपसे पूछ रहे थे कि where do you get your clothes from? Because बहुत ही मजे की आप shirts पहन रही होती थी. And you used to be like, this is either going to be very expensive या फिर she probably got it from Dubai जहाँ से ये आई है, right? I have actually searched और वो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती. अगर मिलती हैं तो I am a student, but वो वाली चीज़ें बहुत यहाँ ज़्यादा पे expensive होती हैं. फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट नहीं है ना एक्चुअली. यहाँ पे वी बाय थिंग्स टू कीप देम फॉरएवर, व्हिच इज वियर्ड टू मी. लाइक अगर हम ब्राइडल गाउन्स, ब्राइडल ड्रेसेस की बात करें तो लाइक आई डोंट रिमेंबर वेयरिंग एनी ऑफ दोज जो शादियों पे मैंने कपड़े बनवाया मोर देन लाइक ट्वाइस थ्राइस. वो बात अभी तो बहुत आ जाती है कि यार देख लिया सब, पिक्चर आ गई है. रिपीट करने का वो कॉन्सेप्ट बहुत समझा जाता है कि यार मैंने कपड़े ओके गाइस आई हैव अ वॉशिंग मशीन, आई वॉश माय कपड़े सो आई कैन वेयर. Yeah, that is so true. Yeah, I do. So yeah, उसको एक उस तरह से देखा जाता है तो obviously फिर इधर वो कॉन्सेप्ट नहीं है. But I'm very glad that now it's more common than it ever was. And like I wouldn't say I'm a very big like enthusiast of climate change, but it is time that we actually resort to sustainable means. ना मतलब आप ऐसे ब्रांड से कपड़े क्यों ले रहे हो who are making like everything from scratch. Like if you need something जो कि already exactly exist करती है, you should like go for that. That's a more sustainable option. Again, win-win situation for everyone. Yeah, exactly. और especially पाकिस्तान की आजकल जो situation हुई है after floods, I think so those people they go through a lot. They are going through a lot. A very big मतलब अब लोग सोचते हैं कि यार donate क्या करें. I think like एक बहुत अच्छा आइडिया है कि like especially this season, अभी जब winters आ रही हैं, सेल लग रही है, आप जाएं, you can buy a lot of clothing items and you can just give them away.
If you are And capable even if enough, you don't want to give those away, give your old ones away. It's very that's important the to have best those thing in need, actually. you know. बिल्कुल दुआएं भी मिलेंगी और अच्छा काम Do भी you करना। guys know about digital clothing, by the way, by any chance? What's that? I don't know, I feel like I've heard. Yeah. So basically, I've seen so many videos on YouTube ke bahar abroad, people are now opting for digital clothing rather than going and physically buying those clothes, you know. You just pay the online store and you send them a photograph of you in like a bodysuit. Yeah, I have seen a video it's either related to nude that. suit or it's black, it's completely black ya phir nude hai, and you can just send them those pictures, they will edit it for you, they will put that They'll send you digital back the suit pictures, on you, yeah. and then you can just upload it, you know, because half of the things that we do, it's for the camera and it's for the gram, you know. Yeah, so it's something that's more convenient for people, plus it's you know, you can save a lot of money because of And it. I don't know if you guys know it, Snapchat के ऊपर एक नया filter आया हुआ है that is exactly this. It's digital clothing. It may not be in Pakistan, but I have seen it on social media. Yeah. How convenient is that, Yeah. guys? I mean, I literally buy half of my clothes so I can take pictures in them, right? So why don't you just send a picture and then... Especially कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं कि वो लगते बहुत अच्छे लेकिन they are not comfortable to wear. And then there are so many clothes that you can't really afford, you know, like बहुत expensive भी होते हैं. So why not just pay for it online थोड़ा बहुत and then just get a picture out of it. ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर एक ये बहुत डर रहता है कि आपके एग्जैक्ट उसी साइज के कपड़े आएंगे जो कि आपने मंगवाए हैं या नहीं, बिकॉज देयर आर फ्यू ब्रांड्स जो कि कभी कभी हो जाता है इशू. So I think that's a good thing. Yeah, that is me with Zara. By the way. Zara के तो हर size different है यार. Have you guys ever gotten anything from Zara? Like उनका कभी large, because I'm a little broad and tall, तो कभी large पूरा आएगा, कभी extra large आएगा, कभी medium भी आ जाएगा, which is so weird. या कभी small भी आ जाएगा. So it's a hassle, you know, to really order clothes online when you're not exactly fitting that body type, you know. Yeah, that's true. So ये चीज़ होती है. So that's a very major problem, by the way. Yeah. Especially, how are you guys with like sizes and stuff? Like, is it a don't pain? ask. Getting plus size clothes in Pakistan is a task. It's how to emphasize it. It is a task. The brands, yes, they make 2XL, XL clothes, but their XL is the actual medium, you know. So it is a task because I'm a plus size girl and I have issues with it, a lot of issues. But I shout out to Cardi, man. हाँ, Karta के sizes बहुत अच्छे हैं. Their sizes are excellent. बहुत अच्छे उनके sizes हैं. Yay, Thank you. Good job. Yeah, that is a problem that I have faced for the longest time as well. Why? Because I used to be like really skinny, and then like उस time पे मुझे जो कपड़े हैं like the shoulders were always medium के fit, but नीचे से वो ऐसा लगता था जैसे you know it's like a लिफाफा, you know, and then now it's like अब मुझे medium ही पूरा आता है, but then again it's still a pain, you know, every time you're going and you're I can never just walk into the store and buy something like that without trying it. So that's why जब COVID आया था तो it was really hard for me to really buy clothes because मुझे पता ही नहीं होता था यार कि मैं size क्या लूँ. And then with all these brands, सबके sizes different है यार. Exactly. कहीं किसी का आपको large fit होगा, किसी का medium होगा, and थोड़े से आप लंबे हो या थोड़ा सा आपके body I think so. पाकिस्तान में Generation, Khadi, यही 2-3 brands हैं. Oh my god, I love Generation. Oh, I love Generation. Generation too. is my Like, favorite. same. Generation is on the top. Where do you guys mostly shop from? I don't have any specifics, but again, Khadi is my go-to and Generation as well. But these two, most probably. What about you, Izza? मैं कोई भी brand try कर लेती हूँ. That is something I like about I Izza. do that too, yeah. She's like whatever, बस कपड़े अच्छे लग जाए. हाँ. मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे ना तो फिर I'll just buy it. कि अच्छा you know try भी कर लूँगी. तो I have like tried उस तरह से बहुत सारे websites मैंने try किए. और कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ आपको? या बैड एक्सपीरियंस हुआ है. लाइक एक बार इतना अच्छा लाइक एक बार वो क्लोथिंग मैंने सूट जो मंगवाया था वो बहुत अच्छा था, और फिर अगली बार मैंने मंगवाया तो उन्होंने नेवी ब्लू की जगह रॉयल ब्लू भेज दिया था. एंड आई वाज लाइक no, I remember this rant of yours. Yeah, मैंने कहा this is so crazy, I don't want colors this. yes Yeah. colors समझ ही नहीं आते यार. I remember एक दफ़ा ईद पे I was desperate, you know, मैंने अभी तक ईद के कपड़े नहीं लिए थे. मुझे था last minute shopping. हाँ, last minute shopping करनी है. and then last minute shopping जो है आपकी वहाँ जाके और होती है, right? Yeah. तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा ऑनलाइन बिकॉज थोड़ा टाइम था गाड़ी के आने में. तो मैंने कहा जब तक ड्राइवर आता है तो मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, and then I'll just have to go to the mall, just pick it up and I'll come back. तो उसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया. एक बहुत मुझे प्यारा
मिल गया, वाइट कलर का था, एंड आई वाज लुकिंग फॉर वाइट बाय द वे. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ऑल माय ड्रीम्स हैव केम ट्रू फॉर दिस ईद एंड आई विल गो एंड आई विल गेट इट. अच्छा, एक तो ड्राइवर लेट आया, 8 के करीब आया था, तब मॉल्स जल्दी बंद हो जाते थे, आई रिमेंबर. तो मैं वो भागी भागी मैं गई हूँ, एंड द मोमेंट आई सॉ दैट, उसमें और उस पिक्चर में ज़मीन आसमान का फर्क था. एंड माइंडेड दिस इजंट सम एवी सा ब्रांड, वन ऑफ द वेरी फेमस ब्रांड, कि यार ये पिक्चर में क्या है, ये असल में क्या है. एंड यू नो एट दैट मोमेंट व्हेन यू लूज होप कि ओ माय गॉड आई एम नॉट गोना लुक गुड दिस ईद, एंड देन आई वाज लाइक ओ गॉड ये वो. फिर मैंने सर्च किया एंड देन आई फाउंड अनदर वन, बट दैट वाज ऑब्वियसली अ कॉम्प्रोमाइज ऑन माई पार्ट बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो. So that happens a lot with me. Like with online shopping, you can never trust what you're actually gonna get, right? अभी मैंने एक और कुछ कपड़े ऑर्डर किए हुए हैं, something that I was actually ranting to you about या you about as well. तो उसमें ये था कि अब मैंने इतने ज़्यादा कपड़े ऑर्डर कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन वो मैंने अब मुझे पता नहीं है कि वो आएंगे कैसे, you know, and I have spent all my money, ठीक है, but there's a chance, good luck to you. Yeah, and but there's a chance that this winters I'm not going to have clothes at all. So that is something that is getting to me. I'm like fingers crossed कि अब अच्छे आ जाए वो. रेडीमेड्स जो कपड़े होते हैं मुझे तो उनकी लेंथ का बहुत इशू होता है, बिकॉज जो मेरे साइज़ के होते हैं उनकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती है. हाँ. या जो अगर साइज से थोड़े ज़्यादा बड़े लो तो वो उनकी लेंथ बहुत ही लंबी होती है. एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू लव ये जो कुर्ते आते थे ना, छोटे शॉर्ट कुर्ते इन लाइमलाइट और इस तरह के ब्रांड्स पे आते होते थे, आई लव देम, ठीक है, लेकिन व्हेन एवर आई वोर एनी ऑफ दोज तो मुझे वैसे तो पूरे होंगे बट द लेंथ वाज सो शॉर्ट कि आई यूज्ड टू बी लाइक ओ गॉड, looks like a shirt. हाँ, it looks like a because shirt, we live here in Pakistan and length is a really big issue. Yeah, it's a really big issue. अच्छा, वैसे एक लाइफस्टाइल चेंज जो मैंने इन द रीसेंट ईयर्स की है ना, दैट इज के आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम अनस्टिच्ड टू प्रेट. और जिंदगी बहुत I have never worn unstitched dresses. मैंने think so, कभी कराई नहीं. दोनों का same होता है. घर में एक वो चलता है कि understandable. हाँ यार कि अच्छा सब ही ये करते हैं, अनस्टिच्ड खरीदते हैं, फिर बाद में टेलर के चक्कर और ये वगैरह. तो शुरू तो मैं करती थी कि अच्छा, बट देन फिर अच्छा प्रिंट नहीं पसंद आ रहा, या वो जब लगा हुआ था जब मॉडल ने बने थे तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन स्टिचिंग इतनी महंगी थी उस तरह क्या वो सारा कटआउट वगैरह करना, तो अच्छा सिंपल स्टिचिंग के साथ चले गए और उस तब नहीं अच्छा लग रहा था, तो अच्छा यू नो बस दिल उठ जाता है कपड़े से एंड ऑल दैट. तो उसके और फिर जो टेलर के मसाइल होते हैं वो तो नखरे होते हैं. Like for the longest time, you know, मैं जैसे अभी पहले भी मेंशन कर रही थी कि मैं नीचे से ठीक थी बट माई शोल्डर्स वर ऑलवेज ब्रॉड, राइट. तो जब भी मैं किसी टेलर से सिलवाने जाती थी, नया टेलर होता था, तो ही यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि जो इस शोल्डर के हैं वो नीचे से खुले होने चाहिए, और जब वो नीचे का साइज देखता था तो वो कहता था कि टेलर को डिजाइन समझाना is a task. It is a task. Oh my it is God. really a task. So I left that all together. I was like कि यार रेडीमेड ले लो, उसमें बहुत ही ईज आ गया मेरी जिंदगी में. बहुत आसान है. एंड अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है ना. पहले चलो टाइम होता था कि आप जाओ, मेरी थोड़ी बहुत mothers were like, you know, लेस लो, ये लो, करो. और अभी अच्छा कपड़े डिजाइन करने का टाइम नहीं होता ना. लाइक वी रियली नीड द फास्ट क्लोथिंग. बाकायदे इस तरह की ब्रांड्स आई हैं जो कि सिर्फ पेट निकाल रही हैं. तो दैट इज़ वेरी नाइस कि पहले हमारे पास लाइक मुझे जितना मुझे याद है पहले इतना प्रेट नहीं होता था ऑनलाइन, बट नाउ इट इज सो इजी टू गेट इट. एंड एक्चुअली देयर इज दिस ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम, मुझे उनका नाम स्किप हो गया. उनके अंदर आप खुद ही अपने ड्रेस का डिजाइन भेजते हो. a lot of brands do that now. The way you want to get it stitched and they get you that thing. How amazing. Yeah, that is so cool. Like you can add any lace or any button and then I still remember how I used to go and then वो सारा उनको समझाना and then the headache that came along with it कि यार मतलब अभी भी there's a chance कि he won't make it right, and that always used to happen. My instincts were always right, you know, कि हमेशा गलत बन के आता था, and usually गलत बन के भी तब आता था जब you need it the most, कि कल इवेंट है, आज गलत बन के आएगा, है ना. हमेशा there was this clothing item जो कि मुझे बहुत पसंद था और किसी से मिला था एज अ गिफ्ट. तो उसमें बैंड वाला जो वो है ना गला, वो बहुत अच्छा लग रहा था. आई वाज लाइक आई विल गेट दिस बैंड टू स्टिच. ठीक है, अब इतना ज़्यादा मैंने सारा बताया टेलर को कि अच्छा ये शी वाज लाइक ओके परफेक्ट, आई विल डू दैट. ठीक है, जब कपड़े आए ना तो मेरे कपड़े अकेले नहीं गए थे, लाइक मेरे भी गए थे, अम्मी के भी गए थे. उन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया एंड आई वाज लाइक oh my god, I was so excited for I can't that. imagine. Yeah. बहुत बंदा upset हो जाता है यार. उसके बाद अभी तक वो कपड़ा मेरे पास है because I love that,
लेकिन मैं नहीं पहनती। यार आपका दिल उठ जाता है, दिल to be उठ very जाता है। honest. या अब मेरे भाई की जब शादी थी तो शादी इज़ लाइक अ बिग थिंग, दैट टू ऑफ योर ओन सिबलिंग। और मैंने एक बुटीक में अपना ड्रेस दिया था बनवाने, लिटरली उसकी बारात के कुछ घंटों पहले मुझे वो ड्रेस आया और मैंने पहन के ट्राई किया, वो टाइट। Oh God, that is the एंड आई worst. नो कि उसको मैंने कैसे ठीक करवाया, कैसे उसको सेट करवाया, फिर वो थोड़ा ठीक है, वो बेहतर हो गया, पर आई जस्ट डोंट वांट टू वेयर पैनिक यार, उस सब में ना आपका बाल बनाने का दिल करता है, ना आपका मेकअप करने का दिल करता है, you're just like whatever, you know. Now everything is like ruined. And I can only imagine the tension that the brides go through जब उनके साथ ऐसा होता है. I mean, we're still the guests, man. Like सोचो, it's your big day and this happens to you. You have to get captured like literally every second. Oh, That God, is I cannot imagine. Worst nightmare. I think for every girl, right? Yeah. Anyway, coming back to our original topic, thrifting. हम हमेशा इधर-उधर निकल जाते होते हैं. But anyway, I know that Sanya, आपने इसके ऊपर काफ़ी research किया and you used to go get a lot of clothes जब आप fashion कर रही थी. So tell us a little more about that. So what we used to do, we used to, a group of friends, we used to go to Landa Bazaar in Gujranwala, और वहाँ पे सबसे पहले तो अच्छा, one question. I'm sorry to interrupt, लेकिन is Landa and Itwar Bazaar the same thing? kind of, yeah. अच्छा. They are the same thing. तो वहाँ पे हम गए, पहले तो ऑब्वियसली हम भी थे, हम लंदन में जाके शॉपिंग करेंगे, फिर जब हमने खुले कपड़े बेसिकली हमने लेने होते थे. I think we all have that attached to us. कि एक दफा the first time you go, you're really like, is this really us? Like, is this how my life's gonna be? But I relate, जो अभी ये बोल रही है ना, I relate to it so much because I'm also a design student. तो हमें जो सामान चाहिए होता है, they are super That is expensive. expensive, So you always need to go to No thrift guys, stores and everything find is super expensive now. I mean, आप फर्नीचर में घुस जाओ अगर, इवन ये जो सिंपल हम मिरर्स बनवाते हैं अपने कमरों के लिए, इवन दे आर सो एक्सपेंसिव एल्सवेयर, सो या एनीवे कंटिन्यू. इधर उधर निकल जाते हैं यार. अच्छा हाँ, कंटिन्यू. हम लोग वहाँ गए, सबसे पहले तो हमको यही रहा कि यार अच्छा ठीक है, वी आर गोइंग इन लंडा बाजार. उसके बाद हम वहाँ गए, तो जब हम वहाँ पहुँचे हमने थोड़ी रिसर्च की, इतना खूबसूरत चीज़ें हम लोग के यार, वाओ. वहाँ पे रग्स, कारपेट्स, oh my god, वहाँ पे carpets. I actually really like rugs and carpets, so I Everybody has that one obsession. yeah, so oh god, they were beautiful. उसके बाद फिर हमने जब कपड़े देखे तो हम लोग literally बोरियां भर के कपड़े लेके आए थे, and they were so like handy. So like किस तरह के like खुला कपड़ा जो होता है वो लेके आए थे? अच्छा, खुला कपड़ा. And is it like also cheaper than ये जो other stores जहाँ से हम लेते हैं? Obviously it was cheaper than we bought the बोरियां ना. नहीं, हाँ, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि actually इतवार बाजार वगैरह के अंदर they're very expensive, so उस सेंस में मैं पूछ रही हूँ कि अगर if that was cheaper. We didn't go for like those चीज़ें ना, जब for instance वहाँ पे एक कोट था, उसके ऊपर टैग लगा हुआ था Abercrombie and Fitch का. हमने उससे प्राइस पूछी, ही सेट के पता नहीं बहुत महंगा है. हमने कहा क्यों भाई? ही सेड इसमें सिर्फ इतना सा डिफेक्ट है, इतना सा सुराख है, तो उन्होंने यहाँ भेज दिया. हमने कहा ठीक हो गया भाई. Oh my god, that's the best though. Yeah, and I've actually ordered one long coat for winters from a thrift store on online, and that is a really good experience. बहुत अच्छा experience रहा है मेरा तो. Pretty good. My first time going to Itwar Bazaar was when I went with my friends. University में I figured out about Itwar Bazaar, and also we had to meet somebody. हमने किसी से कुछ चीज़ें खरीदनी थी, and he said कि मेरी वहाँ पे शॉप है, तो आप वहाँ आके मेरे से मिल लें. मैंने सोचा मीटअप से oh yeah, because that's the place to chill. Yeah, but anyway, so we went there, and when I entered Itwar Bazaar ना, वही बात है कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाँ really, but when I entered I was like, मैं इधर उधर देख रही हूँ, I'm just like damn, like, and I'm one of those people who gets excited जब कोई ऐसा स्टोर भी होता है ना, $1 स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे छोटी हाँ बहुत चीज़ें होती हैं या बहुत कलरफुल चीज़ें होती है, तो I always get excited. तो उस टाइम पे मैं हो गई कि oh wow, like what is this place that I never knew about. And then जब मैं आगे गई, and then when I started going more often, फिर यूनिवर्सिटी टाइम में ही जाती होती थी, and then I realized कि जितना उस टाइम पे बजट होता है आपका, उस हिसाब से this really is heaven, So then I started going, and then I loved it. I got a mirror from there, I remember. मैंने वही सेम मिरर पता किया था कहीं और से, from some local store near Sadar.
एंड उन्होंने वो मुझे बताया था कि आपका 10,000 के इर्द गिर्द बनेगा, ठीक है. एंड फॉर मी नॉट नोइंग के यू नो क्या प्राइसेस होती है, इज दिस चीप, इज दिस नॉट चीप, तो आई वाज लाइक हाँ ओके फाइन, एंड आई विल जस्ट आस्क माय मॉम और माय डैड फॉर द मिरर, ये वो. एंड आई वेंट देयर एंड द सेम एग्जैक्ट मिरर, इन फैक्ट बेटर देन दैट बिकॉज वो फ्रेम के साथ भी था. आई गॉट इट फॉर 3,000 rupees. Oh my God. एंड आई वाज जस्ट लाइक So yeah, that is my first experience. तो फिर I fell in love उसी time पे. I was like यार यहाँ आना है मैंने. And then in my whole family, I have told everybody about it. And now I've seen so many people from my family go there. The same people who used to be like, oh my God. Yeah. And they're like, oh my God. Like, अब वो जाते हैं. So yeah. I'm that person in my family कि जब season शुरू हो रहा है ना, अब जैसे मैं अभी गई हूँ इतवार बाजार, अब मैंने अगले हफ्ते का प्लान बना लिया अपनी बहन के साथ कि you know what, we'll go to Itwar bazaar, you need to shop for your clothes over there and everything. So I've never bought clothes from there. Yeah, shoes going to. Yeah. I've only gotten jewelry, furniture, और क्या लिया हुआ है मैंने? It's like all it's all like all cute stuff. I actually think कि जो पाकिस्तान में ना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम स्पेशली लड़कियां बहुत फॉलो करती हैं कि oh my God, they're the influencers. So yeah, I've seen it a lot of times that they, you know, they sell their clothes, their pre-loved clothes. Yeah. That is so nice because That is so nice. Yeah, exactly. they're promoting something really nice, which I would love to say. Yeah. कि It's sustainable as well, ना? आप you know, वही बात है, like given their lifestyle, they have a lot of like packages coming in and ज़रूरी नहीं है, it's not that they don't like, कुछ उनके स्टाइल के नहीं होते. yeah. तो हाँ, That's very wise to really give away the things that you don't use. Yeah, yeah. So yeah, thanks to the influencers. yeah. And if like people जो जिन लोगों को ये है attached है ये notion with bazaars and with Itwar bazaar and Nanda bazaar, you should It's just okay. go. Yeah, it's okay, guys. It's okay, yeah. Secretly, everyone loves Everyone it. Like, not gonna lie, That is very secretly, true. everyone loves it. वो एक बहुत फेमस डायलॉग है, करता हर कोई है, बताता कोई नहीं. Yeah, so Yeah. क्योंकि जब मैं कभी गई नहीं थी तो I was like okay, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द लोगों ने ये डाला कि लंडा Yeah. और फिर जब मैं गया I was like We wow, also have this looks like heaven. हाँ, हमारी सबकी हैबिट भी होती है ना, we listen to things and we believe those things until and unless you know आप जाओ नहीं, आप देखो नहीं, you shouldn't really do it, right? But we do that, right? तो अब जब आप जाते हो then you're awestruck, you're like oh my God. Yeah. And जिससे मुझे याद आया कि when you have to you know अगर आपने ड्रेस अप करना in a certain way, that place is the best to get your clothes. Halloween costume, like Halloween costume, and it will not cost you a kidney. I can relate to that because I remember once I went with a friend और उसने कुछ बहुत अच्छा लेना था, and then when we went to these normal ये जो हमारे brands है, famous brands पाकिस्तान के in the mall, तो वहाँ पे वैरायटी ही नहीं थी. You know, you can't really get, अगर if you need a black blazer at a certain point, there's a high chance you'll get it there but not in the stores उस time पे, right? So then Itwar bazaar is like, and especially you know, your those savior. who like celebrate Halloween and stuff, that place is heaven. Oh, that is interesting. I did not know that कि वहाँ Halloween की चीजें भी होती हैं. वहाँ पे सब you have everything like legit costume. I feel like I need to explore more, but yeah, okay. Like you'll go there and you'll be like ये भी है and you'll keep questioning के इतनी जिंदगी मैंने कैसे गुजारी इसके बगैर, because oh no, I felt that way जब मैं यूनिवर्सिटी में भी गई थी कि इतनी जिंदगी कैसे गुजार ले यार इसके बगैर. ऐसा ही है, it's a good thing, I would say. Yeah. Anyway, anything else you guys want to add? If you haven't gone there, Please this is go. the time. This is the time. This is your sign, guys, to go. This is your sign. And actually like promote this kind of you know culture, anything that promotes also sustainability. It's just the name Landa, वरना it's all everything It's over there just is top Landa, notch, otherwise and it's like think of it as if like legit it's pre-loved, like Landa के साथ अब तो वो you just call it a thrift store. That is more better. Like I think it's beautiful कि किसी ने अपना इतना टाइम, पता नहीं कैसा टाइम उसके साथ गुजारा होगा. There will be so many stories. I love how Izza is like, how beautiful is this? तो like आपको नहीं पता कि पिछले इंसान ने उसको like कितना attached होगा, हाँ किस तरह उसने इस्तेमाल किया होगा, but like there will be certain stories attached with it. Yeah. There will be certain
attached with it. So that is kind of cute and pretty and poetic. if Yeah, you that's see why it it's that way. pre-loved. Yeah, pre-loved. It's Yeah. cute. It's cute. I think the It's like- concept is super cute. Yeah, so do I. That is true, guys. That is a very nice ending note, Izza. And something that I agree to. Yeah. Guys, अगर आप भी agree करते हैं तो हमें comments में ज़रूर बताइएगा. And don't forget to like, subscribe and share this video अपनी friends के साथ who you think will enjoy it or who thrift actually, because I Yeah. think this is a very relatable Give them video. a boost that, okay, you're Yeah. doing good. I'm I really feel like- surprised. Actually, like I have gone to मतलब इस bazaar with friends. I have kind of कभी भी outing नहीं की and we have enjoyed it so much Yeah. क्योंकि हम वो कोई कपड़ा पकड़ के नहीं पहन रहे होते कि बहुत लोग Yeah, it's an experience in itself, Yeah, right? true. तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. If you have any other suggestions for us, let us know. We will talk about that too. See you guys in the next episode. Allah Hafiz. Bye.